भारत से भिड़ने का अंजाम क्या होता है ये तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया। अमेरिका के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन अब इसी अमेरिका में भिड़ रहे हैं ट्रम्प के दो करीबी। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, जो भारत पर दिन ब दिन जहर उगलते हैं। उन्होंने एलन मस्क पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल मामला तब शुरू होता है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर फैक्ट चेक जोड़ दिया। नवारो ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और इस राजस्व से रूस का वॉर मशीन चल रहा है। ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर नावरो ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि तथ्य भारत के साथ ज्यादा टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां खत्म हो रही है। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है। राजस्व रूसी युद्ध मशीनरी को पोषित करता है। यूक्रेनियन रूसी मर रहे हैं। अमेरिकी करदाताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। भारत सच झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी के बाद एलन मस्क एक्टिव हो जाते हैं और फिर एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने उनके पोस्ट पर एक कम्युनिटी नोट जोड़ दिया जिसमें कहा गया कि भारत की रूसी तेल खरीद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए है, ना किसी मुनाफे के लिए। नोट में आगे ये भी जोड़ा गया कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। साथ ही ये भी बता दिया गया कि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीदता है, यूरेनियम और दूसरे मिनरल्स, वो भी बड़े दामों पर, जो उसकी नीति को हिपोक्रेटिकली यानी कि दोहरे मापदंड वाला बना देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फैक्ट चेक के बाद ट्रम्प के करीबी नावरो फिर से भड़क गए और उन्होंने अपने अंदाज में मस्क पर हमला बोलते हुए लिख दिया कि मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नीचे दिए गए घटिया नोट भी यही है। घटिया, भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले उसने कोई भी तेल नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन उच्च गति से चल रही है। यूक्रेनियन को मारना बंद करो, अमेरिकियों की नौकरी छीनना बंद करो। हालांकि उनके इस पोस्ट को भी एक्स ने फैक्ट चेक दे दिया है और साफ कर दिया है कि भारत की एनर्जी ट्रेड उनकी सोवन डिसीजन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता। प्लेटफॉर्म ने फिर अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड पर जोर दिया। पीटर नावरो का यह बयान उस समय सामने आया जब राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासन ने 27 अगस्त से भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया, जिसमें कुल टैरिफ 50% हो चुका है। इस फैसले को रूस से भारत की तेल खरीद से जोड़ा गया। नावरो ने पहले भी भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहकर हमला बोला था। यहाँ तक कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया था। नावरो के विवादित बयान में ये भी कहा गया कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। भारत सरकार ने इन बयानों को खारिज कर दिया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने उनके कुछ गलत बयान देके हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से अमेरिका में ही भिड़ चुके हैं मस्क और पीटर नावरो, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत अपना काम कर रहा है और किसी के काम में दखल नहीं दे रहा। लेकिन अगर बार बार पीटर नावरो भारत की इस तरह से आलोचना करेंगे, भारत के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत को भी मजबूरन एक्शन लेना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कल देखा कि ट्रम्प लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें अपना दोस्त बता रहे थे, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद नावरो को भी इस तरह झुकना पड़े। अब आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? जिस तरीके से मस्क और नावरो की भिड़ंत हुई है उसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. Not sending that signal. They're not. And look, here's the thing. I'm puzzled, okay? Because Modi's a great leader. These people this is a mature democracy with intelligent people running it. And they look us bald-faced in the eye on the tariff part and say, we don't have the highest tariffs in the world, when in fact they do. There's no dispute about that if you look at the numbers. And then they say, oh, we're not going to stop buying Russian oil. Now, what does that mean? I mean, we've talked about this, but it's worth talking to your viewers again. When India buys Russian oil at a discount, and then Indian refiners in partnership in India with Russian refiners make that and sell it at a premium to the rest of the world, right?
Russia uses the money it gets to fund its war machine, kill more Ukrainians, and then the next thing that happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. Putin's war? I mean Modi's okay. war. Let me ask because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. But there are some who say that we're losing leverage with China by eliminating the next biggest economic alternative. You know, I'm so tired of these national security strategists being too cute by half. The reality is you got to stop India and China from buying Russian oil. You do that tomorrow when the war's over. Okay? The war's over. If everybody, including Europe, this is like Europe's still buying Russian oil, which is crazy. Okay? If people just stop buying Russian oil, then it's only a matter of time before Putin doesn't have the money to fund that war. So Modi's a big part of it. It's 1.5 million barrels of oil a day. That buys a lot of drones and bombs to kill Ukrainians. Okay, a lot. Okay, so what's troubling to me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the authoritarians. China, you've been at quiet war with them for decades. They invaded Aksai Chin and all your territory. These are not your friends, folks. Okay, and the Russians. I mean, come on.